Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today's discussion topic is global warming and geothermal activity. What is the greenhouse effect? The greenhouse effect is a natural process in which gases in the earth atmosphere traps some of the sun's heat, keeping the earth warm enough for living things to survive. Have you ever sat inside a closed car on a sunny day? Was it hotter inside than outside? The Earth atmosphere works in a similar way. Firstly, the sun heats up the Earth, which makes the atmosphere will be a warmer. The Earth sends some heat back towards space. Greenhouse gases such as global warming is a long-term increase the average surface temperature or of Earth due to burning of fossil fuels, gases like methane, carbon dioxide, nitrous oxide, cutting down forest and using certain industrial and farming methods. All these reasons are making of a global warming. Bete, I will explain a global warming. What is the reason? Greenhouse effect is a good for us. Just take an example in a simple life. Imagine you are sleeping with one blanket. It keeps you warm. If someone puts five more blankets on you, you become too hot. Greenhouse gases acts like blanket around the earth. बट जैसे ही ये जो हीट की अमाउंट है वो इंक्रीज होती है, इट विल बी मेक्स एन अ ग्रीन हाउस इफेक्ट. ये किसका रीज़न बनती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का रीज़न बनती है. द गैसेस ट्रैप्स द हीट कमिंग फ्रॉम सन से जो हीट आती है उसको अर्थ क्या करती है? ट्रैप करती है एंड कॉजेज एन इंक्रीज इन increase the temperature. The global warming has a great impact on our weather, sea level, and disruption to our ecosystem. Global warming, the inner heat of Earth, geothermal activity causes volcano eruption, glaciers, hot spring, and movement of tectonic plates. Geothermal energy. Geothermal energy is a renewable energy source. That is a renewable resource of energy which is due to its sustainability as long as Earth's internal heat remains active. Global warming has been illustrated. हम देख रहे हैं कि ये हमारी अर्थ है और दिस इज द सन से कुछ रेज आती हैं जो कि लाइट जो हमारी अर्थ है वो क्या कर लेती है? अब्जॉर्ब कर लेती है एंड सम विल बी अ रिफ्लेक्टेड बैक. बेटे अब हमारे पास जो एस्केपिंग रेडिएशंस कुछ जो है वो क्या है? हमारे पास पॉजिटिवली हमारी अर्थ को वार्म रखने के लिए कुछ हीट हमें रिक्वायर है जो कि हमारे हम समझ सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स अ ग्रीन हाउस शेल्टर एज जस्ट लाइक अ ग्रीन हाउस इफेक्ट. बट अगर यही हीट की अमाउंट इंक्रीज हो जाए विच विल बी मेक्स अ ग्लोबल वार्मिंग रीजन्स. इसकी डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं. फर्स्ट थिंग इज हॉरिकेन्स. Due to rise in temperature, more heat is absorbed by ocean with fuels hurricanes, making them stronger and more destructive. अब इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास सनलाइट फॉल करती है ओशन पे तो वो प्रोवाइड करते हैं मोर एनर्जी. हरिकेन्स बिकम स्ट्रॉन्गर ओवर वार्मर वाटर. जब जैसे स्ट्रॉन्गर हरिकेन्स होंगे, इंक्रीज द वार्मर ओशन वाटर विद हाई विंड स्पीड एंड हैवियर रेनफॉल, जो कि हैवी रेनफॉल का रीज़न बनेंगे, कॉजिंग ग्रेटर डैमेज. जिसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग विंड होगी, कोस्टल फ्लडिंग आ जाती है, डैमेज टू होम्स. ऑल दीज आर मेक्स अ रीज़न to increased by a warmer ocean water. Furthermore, ice begins to melt. जो कि हमारे आइस कैप्स जो है वो मेल्ट स्टार्ट हो जाएंगे. सी वाटर एक्सपैंड ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर. दिस रिजल्ट इन हायर सी लेवल. कॉन्सिक्वेंटली storms, surges, and more frequent flooding in coastal areas take place, increasing the damage to homes and communities. Heat wave. How heat wave is produces? What is the reason of a heat waves? Heat waves, global warming, हमें पता है कि इंक्रीज होती है ड्यू टू आर टेम्परेचर राइजिंग. जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है ग्लोबल वार्मिंग का, द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर प्रोड्यूस हीट वेव. हीट वेव प्रोड्यूस करती है. हमें समझ में क्यों गर्मी लगती है?
बिकॉज हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है. द हीट इज ट्रैप्ड बाय गैसेज इन एटमॉस्फेयर लीडिंग टू एक्सटेंड पीरियड टू एक्सट्रीम हीट. Buildings and roads absorb heat and retain it. Cities are particularly affected as building and roads absorb and retain heat, causing those areas be much hotter compared to other. बेटे सिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, बिल्डिंग्स को इफ़ेक्ट करता है. लॉन्ग पीरियड ऑफ extreme heat are called heat wave. Long period of extreme heat is called heat wave. Which places are become hotter? Cities or villages? Cities are more heated areas. As you can see this diagram will be explained how a heat wave developed. Firstly, the sun. The sun sends heat towards the earth. On a very hot days, the earth receives more heat than usual. The second point is our land surface. Land surface become very dry because there is a little rainfall. Dry soil जो है वो heats up faster than a wet soil. The next third point, the step 3 is a high pressure system. High pressure system keeps the sky clear with very few clouds. More sunlight reaches the earth's surface, which makes a more heated the air. The fourth point is hot air stay trapped. That is a high pressure, H for high pressure, L for low pressure. The hot air cannot escapes easily. It stays near the ground and the temperature keeps rising. And the last, which makes a reason that will be a buildings, roads, concrete will absorb this heat, which this heat will makes a reason of a global warming. The next part of this lecture, the next part of this topic will be discussed tomorrow. I hope you can understand this lecture. Be prepared for a next lecture. Thanks for listening. Allah Hafiz.